Okay, so today's masterclass is about management. We'll be discussing the role of management in it, and we'll be looking through the whole chapter through this one video. So, to get started, let's study functions of management and what managers are responsible for. So, the functions of manager includes setting objectives and planning. Managers जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनका काम होता है फ्यूचर के लिए प्लान करना और इस तरह के डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट करना हर एम्प्लॉय के लिए कि वो फ्यूचर प्लान के साथ अपने अलाइन करे ताकि हर इंडिविजुअल को ये पता हो कि उसने क्या अचीव करना है डे एंड तक उसने किस तरीके से काम करना है और उसके डिपार्टमेंट को भी आइडिया हो कि व्हाट आर द गोल्स वी आर वर्किंग फॉर एंड हाउ डू वी रीच टू इट मोर ओवर इट इंक्लूड सॉरी ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव्स तो जब ऑब्जेक्टिव सेट आउट हो गए मगर उसके लिए आपको रेलिवेंट टूल्स एंड रिसोर्सेज की भी नीड होती है दे मस्ट इंश्योर क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेट टास्क टू कीप एवरीवन मोटिवेटेड अब डेलीगेट करना क्यों जरूरी है ताकि जो जूनियर्स है उनको भी पता चले कि दे आर काउंटेड ऑन और एक एम्प्लॉय पे बर्डन भी ज्यादा ना हो तो इस तरह हर किसी के डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि कोई काम डुप्लीकेट हो रहा हो कोई किसी को दो काम एक ही बंदे कर रहे हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक काम दोनों बंदे ना कर रहे हो सो डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी क्लियर टू मेक श्योर दैट there aren't any conflicts unnecessary conflicts I would say और इस तरह के टास्क डेलीगेशन भी होनी चाहिए डेलीगेशन होती है कि मैं हूँ मेरे अंडर एक एम्प्लॉई है अब मैं उसको ये काम असाइन मुझे हुआ मैं अपने एम्प्लॉय को वो काम देता हूँ कि डू दैट ऑन बिहाफ ऑफ मी आई ओवरसी इट फॉर यू सो दैट ही लर्न्स इट एंड इट हेल्प्स इट्स प्रमोशन एंड इट विल ऑल्सो reduce my burden so this keeps everyone motivated another function or responsibility of a manager is to direct and motivate staff so managers are there as the captain of the ship so they must direct their staff they must tell them how they must explain them how they are expected to do their job and effective manager doesn't tell his employee how to do their job he directs them how to do your job and it depends on the employee how they get to it but it depends more on the philosophy of the manager so guiding leading and overseeing people to ensure corporate objectives are met sorry so आपने कुछ corporate objectives set out किए होंगे जो objectives आपके board decide करता है discuss करता है और फिर वो managers को दिए जाते हैं कि you have to meet them within the financial year or whatever period set out तो managers का काम होता है अपने employees को उन पे guide करना उनको लीड करना और ओवरसी करना टू इंश्योर कि ये मीट किए जा रहे हैं और उनको हेल्प भी करना है हाउ टू मीट देम कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक टीम में 3 बंदे हैं तो एक बंदे के ऊपर सारा काम है एंड ऑफन पीपल लाइक आई आल्सो लाइक दैट इफ आई एम असाइंड अ रोल इन अ team I try to do each and everything myself because I have a habit that I want to oversee each and everything this is a bad habit of course but this is a habit common among some people and others wish that other people do their job so it's manager's role to ensure that teamwork they encourage teamwork between departments and division to lower duplications कि मैनेजर्स को ये इंश्योर करना होता है कि डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि टीम वर्क इनकरेज होता है और डिवीजन हो जाती है टास्क की तो फिर ऐसा होता है कि 2 बंदे एक ही काम नहीं कर रहे होते एंड अनदर फंक्शन इज कंट्रोलिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट्स अब आपने टारगेट सेट आउट कर लिया लेट्स अज्यूम कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर $1 million की सेल करनी है मगर लेट्स सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन अक्टूबर आवर फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर और अक्टूबर तक आपका उसका 30% भी मीट नहीं हुआ है until and unless the sales are not in a straight line progressing in a straight line आप नहीं बोल सकते कि ये targets meet होंगे it's highly unlikely that you'll be meeting these targets so it's the manager's job to measure the performance and control it to make sure that the targets are met and more importantly within the time limit they have to make sure targets are being met and if they are not find solution like training workers if training is the problem buying better equipment if equipment is the problem the function of manager includes these 4 but isn't these 5 rather but isn't limited to these 5 so make sure that whenever you are writing down the functions of the manager you have a clear idea that managers are the one simply that lead the ship and are responsible for each and everything of their employees but they must ensure that not only they are focusing on the short term growth of the organization they are also working on the long term growth and by long term growth I mean कि जब एक manager को
अपनी टीम मैनेज करनी होती है, तो शॉर्ट टर्म ग्रोथ में वही होता है कि हर काम वो खुद खुद करता जाए, अपने एम्प्लॉइज को समझा समझा के करता जाए। मगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी होती है तो आपको अपने एम्प्लॉइज को सिखाना होता है, रादर देन उनके लिए करने के बजाय उनको सिखाना होता है कि यू हैव टू डू दिस वर्क इन दिस मैनर। तो उस तरीके से एम्प्लॉइज को पता होता है, तो इवन इफ दिस they have to do the work again, they'll have a clear idea what not to do and what to do. Moving on towards the management roles. So, according to Henry Mintzberg, the nature of managerial work, तो हेनरी मिन्सबर्ग ने कुछ नेचर लिस्ट डाउन किए थे मैनेजरियल वर्क से, तो उसमें 10 डिफरेंट रोल्स आइडेंटिफाई किए थे मैनेजमेंट के, और इन 10 रोल्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया था। इंटरपर्सनल रोल जो पर्सनल से रिलेटेड होते हैं, डीलिंग विद पीपल। इंफॉर्मेशनल रोल्स, रिसीवर सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन। और डिसीजनल रोल्स, मेक डिसीजंस एंड एलोकेट रिसोर्सेज। तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनमें सारे रोल्स क्लासिफाइड हैं। Okay, so let's start with the interpersonal roles. And the interpersonal role includes the manager should be a figurehead of the organization. So the manager should have a fatherly figure over the organization in a positive manner. That he should be a symbolic leader of the company. He should be looking after each and every of their employee. They should be making sure that they make themselves available for the employees and have a figurehead kind of role over the department. The next role includes being the leader, which means that they should be motivating subordinates, selecting and training workers, and they should be leading the organization. So, when I talk about leading, I mean that rather than telling the workers what to do or how to do, they should be telling them, you sh- they should be giving them authority. So, rather than telling them how to do, they should be telling them what to do and should be guiding them how to do it. So, and I'll quote a very famous picture I've seen on social media in this regard. So, you might have seen that there's a picture where there's a pack of animals. I don't remember which pack was it, maybe hyenas or something of that sort. And their leader is leading from the front. So, it says that this is not the leader. And then there's a pack of wolves, and it has the leader of wolves at the back. So this shows that a leader is not the one who leads from the front, but a leader is the person who makes sure nobody from his team is left behind. So this is something that pretty much explains the role of a leader, that they have to motivate their subordinates, selecting and training workers to make sure that whole of their team is taken care of and nobody is demotivated in this regard. Legion. So Legion is a very, very important aspect of a manager because Legion is linking managers of one department with another with the other. So Legion is that when I have and kind of goodwill attached to my name and the other person knows me, so they have an corner soft corner towards me, something of that sort. So a manager should have an excellent liaison because it helps them link between different departments and help their not only their role but their team's job, even eases their team's job as well. So these 3 are the interpersonal roles. Moving on to the informational roles, the manager should have a monitor kind of figure, should be fulfilling a monitor role as well, that they should be collecting data about the operations. They should be a disseminator. Now, what is the difference between monitor and disseminator? That monitor collects information like clocking in and out when you are entering the building or entering the premises and leaving it. Disseminator, that they should be sending information about internal and external factors to relevant people. Now, often organizations have some bonuses, or not bonuses, but some commission based on some certain KPIs. So the managers should disseminate this information to their employees to make them know that they are currently standing at this level, and in order to meet their KPIs, they need to be on this level. So the employees know it, and employees can plan for it. So they should collect information and they should disseminate it. I'm not getting into much detail about it because this is a masterclass, so we are just going through it, but making sure that we understand each and every concept in the quickest way possible. And a spokesperson. This is so important that the manager should communicate information about the business. So when an employee, and this implies externally as well as internally, that when a manager is inquired about their own department or their own business, they have enough and accurate information about the department as well as the business.
for the people outside the business as well as the people inside the business and working under the manager as well. So this is something that is pretty much important. The third group is divisional decisional roles. Sorry. So the manager should have some entrepreneurial qualities in them and they should be able to look out for new opportunities. अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक मैनेजर अपने काम को जॉब समझ के पूरा करेगा या अपने रोल को जॉब समझ के करेगा तो वो अपने वर्किंग आवर्स के दरमियान ही अवेलेबल होगा, उसकी कोई ड्राइव नहीं होगी. मैनेजर्स में ड्राइव होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट को एंटरप्रेन्योर कर रहे होते हैं, एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहे होते हैं या एक सर्टेन टीम को लीड कर रहे होते हैं. सो द मैनेजर्स शुड हैव दिस एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव इन देम. Disturbance handlers, and when there's people there's conflict, so the managers should be flexible in responding to the changes. एंड अगर कोई डिपार्टमेंट में चेंज आ जाता है, कोई पॉलिसी चेंज आ जाता है, पूरे डिपार्टमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो मैनेजर्स शुड नॉट लूज देयर काम इन इट एंड बी फ्लेक्सिबल व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू इट. रिसोर्स एलोकेटर. इफ आई एक्सप्लेन यू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स के हर डिपार्टमेंट को एक सर्टेन रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं कि आपके यहाँ तक रिसोर्सेज पे रीच है या ये चीज़ें आपके पूल में. अब अगर मैनेजर इसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा तो डू यू थिंक दैट द वंस गेटिंग लेस would be motivated to work more? Let me tell you a fun fact. Do you think that the ones getting undue advantage of the resources? अब एक मैनेजर है जिसके ऊपर एक सर्टेन फंड आया कि अपनी टीम बनानी है इस बजट में. मैनेजर ने अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के बेस पे एक एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी पे रख लिया और एक सेम रोल के एम्प्लॉय को कम सैलरी पे रखा. अब ये तो प्रीटी मच ऑब्वियस है कि जो कम सैलरी वाला है वो डिमोटिवेटेड होगा कि उसके मेरे ही साथ काम करने वाले की सैलरी मुझसे ज्यादा है, मेरे ही कॉलीग की, तो ज्यादा पे पे. डू यू थिंक दे विल बी मोटिवेटेड कि मेरी सैलरी ज्यादा है? द आंसर इज नो, क्योंकि उसको पता है कि मुझसे कम सैलरी वाला काम कर रहा है, मुझे ज्यादा मिल रही है, देन आई मस्ट हैव समथिंग स्पेशल इन मी. और वो कभी कभी इसमें एरोगेंट हो जाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है क्योंकि दे आर गेटिंग मनी द सेम द मोर मनी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ जॉब. So this leads to arrogance. And the manager should be negotiator, that they should be representing the organization at all negotiations. अब एक एम्प्लॉय क्या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, until and unless it's not something the manager personally agrees to, the manager should be representing the organization. And even if the manager agrees to it, the manager should be representing the organization and should ensure that they'll be making these changes. So this was Mintzberg's nature of managerial work and 10 different roles he explained with it. Leadership. Leadership involves setting a clear direction and vision for the company. It doesn't have written here that leading from the front or something of that sort. It says that I set a clear direction for you and a vision for you. अब कैसे एक्सप्लेन करते हैं लीडरशिप को? मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ, इनमें सब डिसाइड करते हैं कौन सी लीडरशिप है कौन सी नहीं है. मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास दो एम्प्लॉयज आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आज तुम्हारा काम है प्रिंट करना, आज तुम्हारा काम है फोटोकॉपी करना. ये मैंने लीडरशिप नहीं दिखाई, ये मैंने सिर्फ ऑर्डर्स चलाए. और एक लीडरशिप क्या होती है, मेरे पास दो एम्प्लॉयज सेम उसमें है, मैंने उनसे कहा कि हमें आज 500 फोटोकॉपीज निकालनी है, 400 प्रिंट्स करने, तो हमारा टारगेट ये मैंने मीट कर लिया. फोटोकॉपी मशीन मैंने पूरा प्रॉपर असाइनमेंट कर लिया और मैंने पूरी डायरेक्शन सेट करके दी उनको. मैंने ये नहीं बोला कि भाई तुम ये करोगे और तुम ये करोगे. आई सेट अ डायरेक्शन फॉर देम एंड आई लेट देम डू देयर जॉब्स. द बेस्ट मैनेजर्स आर आल्सो लीडर्स, pretty much obvious. The qualities a leader must have is the desire to succeed. They must have the relevant self-confidence. They must be creative and innovative. They must be multi-talented, and they must have an incisive mind. Important leadership positions in the business. So these are some positions that are important with respect to the leadership positions and how important they are and what makes them important. So directors are the senior managers elected by shareholders. So these directors are appointed in the AGM and they fulfill the role of a senior manager. So these are responsible for delegation, assist in recruitment, meeting objectives within their department. So I got a very funny question a couple of days or a couple of classes earlier that a student was thinking that the directors are owners of the company, which isn't necessary. The directors are employed on the payroll and are senior managers. This is just another word for it. The director's job is to delegate the work, assist in recruitment, and
meeting objectives within their department. So directors are relevant for each and every department, and they fulfill their job in this manner. Managers. Managers are responsible for people, resources, and decision making, have authority over people below them, direct, motivate, and discipline. Pretty much straightforward. Supervisors. So this is some sort of a hierarchical role that at first we have directors, then under them we have managers, and under them we have supervisors. So supervisors are appointed by the management, and they do not have the decision making role, but they are just appointed for make to supervise the workers and make sure the targets are being met. And if not, they have to inform the people above them rather than making a decision over it. So they are responsible for working towards preset goals, which means that they never set the goal. They just make sure that the workers under them are working towards the goals. Workers representative. अब हर ऑर्गेनाइजेशन में हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं. क्या किसी के लिए ये पॉसिबल है कि रोज इनके कंसर्न सुने? एक बहुत मीडियम साइज बिजनेस में भी एटलीस्ट अगर 100,000 वर्कर्स हैं और उसमें से 10% को भी इशू होता है विच मेक्स इट 10,000. क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं रोज 10,000 के 10,000 वर्कर्स को सुनूं? नो. सो दिस 100,000 would represent 10-15 people that they choose would represent them. So workers representative are elected by the workforce and discuss the areas of common concern with manager. So एक common concern है जो सारे workers को face करना पड़ रहा है, वो अपने representatives को बताएंगे. representatives अपने उसको managers के सामने रखेंगे. एग्जाम्पल है कि एक वर्क प्लेस है और वहाँ पर मशीन के साथ वर्कर्स को मसला है, ये मेजर वर्कफोर्स को इशू फेस हो रहा है. तो ये वर्कर्स जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये बताएंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स विल प्रेजेंट दिस इशू टू द मैनेजर. So this is how it works. Now the leadership styles. There are different leadership styles, and we'll look at one of them, each of them one by one, and understand it. And the reason I didn't cover chapter 6 before this chapter is because I wanted to keep leadership styles first. I wanted you to know the leadership styles first. So the first leadership style is autocratic. Decision making at the center. Do X. मैं ऑटोक्रेटिक लीडर हूँगा. मैं बोलूँगा ये करो. मैं ये नहीं पूछूंगा कैसे कर. भाई मैं मशवरा नहीं चाहिए मुझे. मुझे ये करवाना है तुमसे. तुम्हें ये करना है. तुम्हें जूते बनाने. None of my concern, but बनाने. लीडर टेक्स ऑल डिसीजन. एज आई मेंशन कि मशवरा नहीं चाहिए, बस बता दिया जूते बनाने. मैंने डिसीजन ले लिया. बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन दी स्टाफ को कि भाई हमारे गोल्स ये हमें ये करना है. मैंने से बोला तुम्हें ये करना है. तो ये एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है. ये फोर्सफुली एक लीडरशिप स्टाइल है. ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है. क्लोज सुपरविजन ऑफ वर्कफोर्स सॉरी. तो मैं वर्कफोर्स को बहुत क्लोजली सुपरवाइज करूंगा क्योंकि मैंने उनको टास्क असाइन किया है and it's my job to get it fulfilled. तो बहुत क्लोजली सुपरवाइज करूंगा. वन वे कम्युनिकेशन. अगेन सिंपली कहूँ तो मशवरा नहीं मांगा. मैंने ये बता दिया ये करना है, ये कर दो. कोई मशवरा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. फास्टर डिसीजन मेकिंग. गुड फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स. अब जो अनस्किल्ड वर्कर्स है जो सपोजिटली डू नॉट हैव मच एजुकेशन और थिंकिंग टू गिव इनपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग देयर थॉट्स, तो उनके लिए बहुत ये बेहतर रहता है क्योंकि इससे बहुत फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाती है. रादर देन वेटिंग फॉर देयर ओपिनियन, वी जस्ट इन्फॉर्म देम ऑफ आवर डिसीजन एंड आस्क देम टू फॉलो इट. मे डिमोटिवेट वर्कर्स एंड नो स्टाफ इनपुट who have hands on experience. तो वर्कर्स को ये होता है यार हमसे पूछा नहीं, हमसे मशवरा नहीं किया. तो ये इसका नेगेटिव फैक्टर है. अच्छा, next democratic leadership style. I'm going through over it to make sure that we try to cover this as effectively as possible and as quickly as possible. But in order to learn this in detail, let me know. So democratic leadership style is promoting active participation of workers. So this include what should we do, X or Y. So in this case, I take opinions. I ask my team, what should we do? Though I'm the leader, I'll be making the decision, but I'll ask them for their opinions to make sure that I have enough factors to decide on an opinion or decide or make a decision. I have enough factors to consider it. This has two-way communication. एक एग्जाम्पल है, अपने टारगेट कैसे मीट करें. सर हम कर सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दें.
ओके, हम कर सकते हैं मशीन्स बढ़ा दें। ओके, सो दीज आर टेकिंग टू वे कम्युनिकेशन कि मैंने अपने वर्कर्स को ये बताया, एंड इफ इट वाज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आई वुड हैव सेड आउटपुट बढ़ाना है, मशीनें बढ़ा रहे हैं, काम करो। बट टू वे कम्युनिकेशन है, कैसे करें? मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो क्योंकि मुझे पता है व्हाट एम्प्लॉइज थिंक अबाउट इट। फुल स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, दिस इज समथिंग दैट you need to understand that staff इसमें properly aligned होता है क्योंकि सब opinion दे रहे होते हैं तो their involvement is needed in it. Depends on the level of involvement. कितनी सुपरविजन है ये डिपेंड करती है आपके इन्वॉल्वमेंट में, कि आपने अगर डिसीजन में इनपुट दिया है तो फिर आप सुपरवाइज भी किए जाओगे। वर्कर फीडबैक इज टेकन, आपसे फीडबैक लिया जाएगा, भाई हमने ये डिसीजन किया, आपका इस पर क्या फीडबैक है, हाँ ये अच्छा डिसीजन था, नहीं अच्छा डिसीजन नहीं था। सो यू हैव योर फीडबैक टेकन इन दिस। बेटर फाइनल डिसीजन एंड बेटर मोटिवेशन। तो आप फाइनल डिसीजन अच्छा आता है क्योंकि आपने मशवरा किया होता है, आपने कंसल्ट किया होता है अपने टीम से, तो यू लैंड अ बेटर डिसीजन and the employees feel motivated as well. But taking opinions or consulting your team is time taking and not helpful during emergencies. अब सीजन स्टार्ट हो रहा है, आउटपुट बढ़ाना है, एक हफ्ता आपने सिर्फ ये डिसाइड करने में बढ़ा लगा दिया कि कैसे आउटपुट बढ़ाना है। दिस 1 week is a waste and it's very time consuming and not helpful during emergencies. Paternalistic leadership style. So this style believes that managers are in a better position than the workers to know what's best for the business. अब इसमें मैनेजर्स इनपुट, अब डेमोक्रेटिक में होता ये है कि एक तरीके से वोटिंग होती है, द पीपल, द मोर नंबर ऑफ वोट्स फॉर अ सर्टेन डिसीजन इट विल बी डिसाइडेड। बट पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल में है कि आपसे ओपिनियन लिया जाएगा, advise me what should I do, X or Y, I'll make the final call, I'll decide what to do. So this is the paternalistic leadership style. Some consultation but and decision based on manager. Consult किया आपने अपने एम्प्लॉय से, मगर डिसीजन आपने किया। No true participation in decision making. You're just giving your opinion. You aren't participating in the decision making. Workers may be dissatisfied and demotivated कि हमने opinion दिया, manager didn't follow it, which can lead dissatisfaction and demotivation. But still, it's a leadership style and it has its benefits as well. Like paternalistic leadership style में एक ही बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है। डेमोक्रेटिक में अगर इन केस इट फ्लंक्स, पूरी टीम में आप ढूंढते रहो किसने किया था, वो फिर nobody would be raising their hands. There's a chance that nobody would raise their hand to take the responsibility. But in paternalistic, you knew the manager made the decision, so you know who to hold accountable for it. Now, laissez-faire. Laissez-faire means let them do it. laissez-faire को अगर मैं simply explain करूँ, do X or Y as you see fit. So this leaves the decision making on workforce after broad objectives are set, and there is very little input from the management. The level of delegation is high, and workers may not appreciate lack of structure and guidance. अब कुछ पता ही नहीं, लसीस फेयर मैनेजर ने बोला भाई तुम करो, मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी, जो करना है करो। बहुत हाई लेवल ऑफ डेलीगेशन है, मैनेजमेंट का इनपुट बहुत कम है। मगर वर्कफोर्स पे एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है कि हमें वो बढ़ानी है, प्रोडक्शन। अब डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट की किस तरीके, वर्कर्स की किस तरीके से बढ़ाए। तो कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं, अब हमने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई आगे भी जाकर पढ़ेंगे, तो कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं दैट वांट टू बी गाइडेड एंड दैट वांट टू हैव सर्टेन, दैट वांट टू बी गिवन अ पाथ टू फॉलो इट rather than trying to make a path for themselves. So those kind of workers may not appreciate it. और उसमें lack of feedback होता है, मैनेजर्स अपना फीडबैक देते नहीं है क्योंकि they have delegated the task already. So this was one pretty much overview of it. Let's move on to the theory X and Y of workers by McGregor. Douglas McGregor. Yeah. So Douglas McGregor devised a theory on what factors determine the best leadership. अब मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम इसको पढ़ते हैं। दो वर्कर्स हैं, अपनी नोटबुक्स में या कहीं भी एग्जाम्पल बनाए, दो वर्कर्स हैं, एक वर्कर एक्स एक वर्कर वाई। वर्कर एक्स क्या है, उसको अपना काम पसंद नहीं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी बिकॉज इट वुड इम्प्लाई इन योर रियल लाइफ एज वेल। वर्कर एक्स को क्या पसंद होता है कि मुझे बता दिया जाए मैंने कैसे काम करना है, आई वर्क टू इट। मुझे अपना काम पसंद नहीं है, मुझे इनपुट देना पसंद नहीं, मैं सिर्फ मजबूरी की जॉब कर रहा हूँ, ये pretty much इस तरह है। वर्कर्स वाई क्या होते हैं,
हमसे पूछो, हम बताएंगे हम अपना काम कैसा करना है। हमें शौक है ऑर्गेनाइजेशन में अपना इनपुट देने का, हमें शौक है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का। सो वर्क थ्योरी एक्स और वर्कर्स एक्स वर्क it as their job, theory Y work it as a passion, pretty much something of this sort. Now let's read it and we'll have a better understanding of it. So Douglas McGregor devised a theory that on what factors determine the best leadership. अब लीडरशिप स्टाइल हमने चार पढ़े, कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है? बहुत सारे लोग ये पेपर में लिख के आ जाते हैं और ये एक बहुत ग्रेव मिस्टेक है। Either they have paternalistic as the best option and many have democratic as the best option, which isn't the case each and every time because each leadership style has their advantages and disadvantages. And McGregor suggested that you need to decide. You have some factors which determine the best leadership style, and you need to find out the factors and then determine the leadership style you must follow for it. So, for सबसे important factor तो है मैनेजमेंट का एटीट्यूड। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है? मैनेजमेंट अगर वैसे ही ऑटोक्रेटिक है तो फिर कोई दूसरा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैनेजमेंट वैसे ही लेसी स्क्वायर है तो कोई और लीडरशिप स्टाइल फॉलो करने की जरूरत नहीं। और उसने दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस निकाली। थ्योरी एक्स इज दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अज्यूम्स दैट वर्कर्स, अब थ्योरी एक्स क्या अज्यूम करती है अपने वर्कर्स को? दैट वर्कर्स डिसलाइक देयर वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, हैव टू बी कंट्रोल्ड, फोर्स एंड थ्रेटन टू deliver work, need to be supervised at every step, have no incentive to work on ambition. So this pretty much treats its employees as animals or slaves in a very respectful manner, that they do not like their input and would just make them follow by force. While if the management believes its workers to be theory Y, which means that they're happy to work on their own initiative, they do not need to be forced to work, they are more involved in decision making, they are self motivated to complete their tasks, they enjoy taking ownership of their work, they seek and accept responsibility and need little direction, view work as fulfilling and challenging, and solve problem creatively rather than have a very textbook imagination and imaginatively. So these are theory Y kind of workers. So he suggested that theory X and Y are management opinions, not the type of workers. He believed our managers thought will lead to workers becoming like that description. So these are two kinds of workers. And if you even if you give a read, you'll pretty much understand it. At last, we have the factors affecting the leadership style, which is the training and experience of workforce. एक नई वर्कफोर्स है, ऑब्वियसली आप उससे बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ट्रेड भी नहीं है। अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर डिस्कशन, ऑब्वियसली टाइम ही नहीं है डिस्कशन का, तो फिर आप क्यों डिस्कशन के थ्रू करना चाहेंगे? यू नीड अ क्विक एंड इजी सोल्यूशन फॉर इट, एंड फॉर दैट यू हैव टू फॉलो समथिंग मोर ऑफ एन वन वे कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट का एटीट्यूड, फर्म का कल्चर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर कल्चर इतना डेलीगेशन करने का नहीं है, so no need to try to get into that, no need to suggest that to the organization. Importance of issues in general, as I mentioned, students often consider democratic as the best, but this time factor is pretty much the deciding force in it. Each of these factors is pretty much the deciding force in it. आपको समझना पड़ेगा कि केस स्टडी दी जाती है अगर क्वेश्चन में, आपको समझना पड़ेगा उसमें प्रॉपर्ली मेंशन होगा इन 5 फैक्टर्स में से कोई एक तो ये इंप्लीमेंट कर रहा होगा, कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करें। इफ नॉट देन गिव अ जनरल आर्गुमेंट दैट इट डिपेंड्स ऑन दीस 5 फैक्टर्स एंड इफ नॉट 5 amongst these 5 factors, and it should be decided through it. So this is something very very important. I want you all to understand that rather than suggesting a certain fact, a certain style without the information given, अगर आपको सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन आता है, then you need to list that it depends on some factors which include these 5. और अगर आपको कोई ऐसी 5 फैक्टर्स में से कोई एक की भी हिंट दी गई है, then you can guess pretty much land a leadership style through it. So this was pretty much it for this chapter, and I tried my best to sort this chapter out as shortly as possible for you.